तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही उठा सुकून, तू ही और कुछ ना जाना बस। ये क्या टीम है भाई? Think you can bully me? My will embodied. The wind knows me. यो सुवजीत, हेलो ब्रो, हेलो। प्रोस्पैरिटी आई हुई है यार, प्रोस्पैरिटी करते हैं। हेलो प्रज्वल भाई, हेलो, वेलकम टू स्ट्रीम। भाई ये बेस्ट फ्रेंड कुछ नहीं होता, फ्रेंड जोन कहते हैं उसे। अरे मैंने तो शहने का इंतजार, मैं तो शहने का इंतजार कर रहा। अरे मतलब मैं क्या मैं कह रहा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, या फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है मतलब। पर एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। वैसे बेस्ट फ्रेंड ज्यादा मजे लेता है बॉयफ्रेंड से। है बंदी है बढ़िया यार। गुड टू नो। ये जेंशिंग प्लेयर्स को भी गर्लफ्रेंड मिल रही है। हाँ हाँ, तभी तो मैंने कहा थर्ड ऑप्शन लिखो, फ्रेंड जोन। ऐसे मेरे हिसाब से तो बेस्ट फ्रेंड ज्यादा मजे ले लेता है बॉयफ्रेंड से। आओ आओ, करीब आओ। One with nature. Shake it and stir. Ha! My will embodied. The wind knows me. Gotcha. One with nature. क्या मतलब 5 साल से रिलेशन है? अरे रे, 5 साल से तुम जेंशिंग भी नहीं खेल रहे। असल में तो गेम को आया भी नहीं हुआ। दैट वाज शी सेड, आओ आओ करीब आओ, बट लेकिन करना ऊपर ऊपर से। लम्हा। टीम कॉम देख रहे हो, कितना खतरनाक टीम कॉम है मेरा। कोई भी देख के डर जाए। Shake it and Busted. Into the wind. Clouds high. The birds call. The wind knows me. game's up. Time's over. Gotcha. You can't run from death. हाँ बट रिलेशन का 5 साल हो गया है। वही तो बोल रहा हूँ, गेम तो हाईवे में नहीं हुआ। ये आया का हाइड्रा एसएमजी कब से? ब्रो आया का, मेरी आया के पास हाथ पे ब्रेसलेट है, बो है, और वो ऐसे करती है नॉर्मल अटैक, और चार्ज अटैक में ही वो ये करती है। बू। Take it easy. Take your true form. Think you can bully me? One with nature. यार तेरी एचपी भी नहीं। Adorn my night. The wind knows me.
Things are about to get dicey. Quietly now. एनर्जी रीजनरेशन रेट देख लो तुम एलन पे, टॉप है, टॉप नॉच है। चलो दोस्तों, दोस्त को देख के अच्छा लग रहा है कि कोई तो है जीवन में रील की तरह अरे भाई टॉक्सिक हो गया है यार बहुत ज़्यादा। Transfiguration. बढ़िया लगता है यार। One with nature. Clouds high. The birds call. Gotcha. Game's up. Fun's over. The wind knows me. You can't run from death. You can't run from death. कोई तो आते ही बज रहा है आज प्रबल नाम से कोई बात नहीं भाई। By ordinance divine. Shake it out. Into the wind. Fallen leaves. Adorn my night. The wind knows me. Here comes the cash. Quietly now. Can't run from death. आज किसी के कजन की बेटी की शादी है, नेट का लगी पड़ी है, नेट के लगी पड़ी है। हेलो पार्थ सिंह, हेलो ब्रो, वेलकम टू, गुड आफ्टरनून ब्रदर, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सीनो। ओके ब्रो, आस्क। चलो इसका वेट कर रहा था, इसका वेट कर रहा था। वेट भाई प्लीज़ बोल दो सीनो बेकार है। नहीं भाई, उसे सीनो पसंद है, सीनो बिल्ड है उसका, बिल्ड कर रहा है वो, सीनो उसे पसंद है, उसका सीनो है। मतलब सुबह सुबह आ गया उनके घर, अभी नेट ही नहीं मिल रहा। अच्छा तुम शादी में गए हो यार, ये मुझे पता प्रॉब्लम होती है। एक तो मैं किसी के घर जाता हूँ भाई, वाईफाई नहीं लगवा रखा भाई, बिना नेट के जी कैसे रहे हो भाई तुम लोग? मतलब तुम्हारी जिंदगी चल कैसे रही है बिना नेट के? 20वीं सदी में भाई, तो बिना नेट के तुम्हारी जिंदगी चल कैसे रही है भाई? मैं उनसे पूछता हूँ भाई तुम्हें नेट की जरूरत नहीं पड़ती, दे लाइक नहीं, क्या करेगी नेट का? लाइक भाई कैसे भाई, पॉसिबल कैसे है बिना नेट के तुम जी रहे हो? If we level up Xeno normal attacks, so his burst damage also नहीं। No bro, नॉर्मल अटैक्स का बर्स्ट से कोई लिंक नहीं है। बर्स्ट की जो परसेंटेजेस है वो अपनी अलग परसेंटेजेस है। तो अगर तुम नॉर्मल अटैक 0 पे भी रखोगे तो उसका इफेक्ट आपकी बर्स्ट की डैमेज पे नहीं पड़ेगा। देखो मैं दिखा भी देता हूँ तुम्हें पूरा अच्छी तरीके से। ये देखो टैलेंट्स में जाओगे ना, नॉर्मल अटैक्स, ठीक है ये है। अब तुम इधर जाओगे ना तो देखो उनकी अपनी परसेंटेजेस है, देख लो 1 हिट 2 हिट 3 हिट 3 हिट 4 हिट ऐसे करके सारी, मतलब पूरा नॉर्मल अटैक यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग दीप चार्ज अटैक प्लंज अटैक, एंड इसकी परसेंटेजेस अपनी अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर करेक्टर लाइक शाओ देखोगे तो उसके केस में अलग है, यहाँ पे नॉर्मल परसेंटेजेस है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देखो नॉर्मल चार्ज प्लंजिंग अटैक डैमेज बोनस। तो इन दिस केस आपको नॉर्मल अटैक और एलिमेंटल बस दोनों बनानी पड़ेगी, बट सीनो के केस में ऐसा नहीं है, लिंक्ड नहीं है। बट मैं स्टिल फिर भी 8 पे कर रखे क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है सीनो, तो इसलिए। बट कोई लिंक नहीं, अगर तुम इसको लेवल 1 पे भी रखोगे तो बर्स्ट की डैमेज में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। बबे तो मम्मी को देख के हंसी आती है, जब वाईफाई लगवा रहे थे तो मम्मी सबसे गुस्सा रहती थी कि इसके क्या ज़रूरत है, आज वाईफाई तो 1 1.5 साल हो गया है, सबसे ज़्यादा नेट खर्च हुआ है इंस्टाग्राम में यूज बाय मॉम। सुनो का क्रिट रेट 58 हो गया है, 2 पीस सेट लगा के बढ़िया, 58 इज़ गुड, बढ़िया बढ़िया।
एंड डिज्नी वॉच 1000 में। हाँ वो डेली सब देखते हैं डिज्नी, उस पर डिज्नी हॉटस्टार पे मेरी मम्मी भी देखते हैं। प्रज्वल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। होता है भाई, होता है। और पता है कुछ लोग तो भाई लिटरली बिना नेट के कैसे उनकी कैसे जी रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता भाई। तो जाता हूँ शौक हो जाता हूँ भाई, नेट ही नहीं है तुम्हारे घर में, वाह। लाइक कि हाँ नेट की ज़रूरत क्या है, क्या करना है, फ़ोन में मिलता है नेट वही काफ़ी है। मैंने कहा फ़ोन दिन का 1 GB नेट तुम्हें काफ़ी पड़ रहा है? अरे एक दिन का 1 GB तुम्हें काफ़ी पड़ रहा है? मतलब सीरियसली दिन का 1 GB तुम्हें काफ़ी पड़ रहा है? 1 GB नेट में हो जा रहा है तुम्हारा दिन का, ये भी सही है। नई सीनों का लगभग 60 70, अरे मतलब उसका पहले 50 था ना, तो उसने टू पीस किया तो 58 हो गया। चाहिए तो 70, मैं वो चीज़ भी बता चुका हूँ, बट बेटर उसने किया है पहले से, तो उस चीज़ में तो मैं बोला सही है। हमें मिडिल क्लास मम्मी लोगों का सबसे सेम होता है। मिडिल क्लास की बात नहीं है, अरे जनरेशन की बात होती है ना, उन्हें लगता नहीं है नीड है इतनी है वो, फिर कोई बात है। मेरा जी फोर्स में जंशिंग 1 घंटे में 6 GB यूज़ करता है। भाई 1 GB तो कुछ भी नहीं है नेट, अगर तुम मतलब मान लो गेमिंग नहीं भी करते, नॉर्मल आप नॉर्मल नेट भी यूज़ करते हो तो 1 GB कुछ ही नहीं है। अगर आप मेरी पूछोगे तो मैं अकेला ही मेरे पीसी में कम से कम 600 700 GB दिन महीने का ख़त्म हो जाता है। 1 GB तो कुछ भी नहीं है यार। मेरे में 500 MB 1 घंटे 1 घंटे में, वही मैं कह रहा हूँ 1 GB दिन का तो बहुत मतलब, अगर वही तुम्हारा सर्वाइवल है कि उसी पे सर्वाइव करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो बहुत कम है। पर मोस्टली लोग क्या होता है, घर में वाईफाई होता है तो वो फ़ोन इंटरनेट तभी यूज़ होता है जब वो घर से बाहर होते हैं, और एक बार वो घर पे आते हैं तो वो वाईफाई यूज़ करते हैं सब। अच्छा तुम क्लाउड गेमिंग करते हो, ओके ओके। वैसे स्टेडिया नाम है ना जो गूगल का क्लाउड गेमिंग है, वो बंद हो रहा है। मतलब गूगल को उसमें उतना कुछ वो हो नहीं रहा, गूगल को फ्यूचर नहीं दिख रहा उसमें, तो शायद से वो बंद हो जाएगा, गूगल बंद कर देगा। मेरा फ़ोन डेटा में गुजारा कर रहा मेरा फ़ोन डेटा में गुजारा कर रहा हूँ। हाँ अभी तो तुम वहाँ गए हुए हो तो फ़ोन डेटा में वीडियो चीफ और यूज़ कर रहा। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, मैंने गूगल का क्लाउड गेमिंग पढ़ा था तो वो लोग बंद कर रहे हैं। स्टेडिया स्टेडिया नाम है ना, ऐसी कुछ का है। Take it easy. मतलब वो कह रहे हैं कि उनमें कुछ हो नहीं रहा उनका प्रॉफिट एंड ऑल, तो हो सकता है कि बंद हो जाएगा स्टेडिया। कल लौटूंगा घर। भाई बहुत एक पर्सनल हेल हो जाता है भाई जब नेट ना हो ना, फ़ोन नेट पे गुजारा करना पड़े पूरा पूरा दिन। हाँ वेट अंटिल, कमीशन में वेट क्यों कराते हो यार अगले दिन के लिए? क्या टाइम है? हाँ नेक्स्ट इवनिंग। हेलो आ गए भाई। हेलो अरूप, हेलो, वेलकम ब्रो वेलकम। हेलो एस्कडार, हेलो ब्रो, हेलो, वेलकम वेलकम।
सही बबूदन करता है भाई इसके यार। इतना टाइम लग गया ये वाला कमीशन करने में। नेक्स्ट किस में पुल करोगे? मैं तो नेक्स्ट अपडेट में करूँगा ना, बेजू पे पुल करूँगा। बेजू के बाद देखते हैं वो जो कैट गल आ रही है वो कैसी हुई। मेरे को जियो करेक्टर से तो पसंद नहीं है। पैसे भी ले लेते हैं ये ले। और भी है भाई, 2.5 अलग होंगे, 1500 अलग होंगे ना। ये 2.5 और वो 1500 है। बस इजी चीज़, एक चीज़ अच्छी हुई, मेरे 2 कज़न जंशी खेलते हैं उनकी सही है। मैं नईदा पे जा रहा, नईदा भी सही है। मैं मेरे पास तो है, अगर नहीं होती तो जाता। देखते हैं यार, अभी इस अपडेट में तो मेरे पास जो आ रहा है वो सब है ही, तो कोई पॉइंट नहीं है इस अपडेट में पोल करने का। कॉन्स्टलेशंस में मैं उतना जाता नहीं हूँ तो। Take it easy. मैं शैने पर जा रहा, जाओ भाई जाओ शैने स्कूट। 266 कौन आ रहा है? Take your true form. One with nature. हाँ नहीं यार, नहीदा तो कंफर्म्ड है शायद, उसके बाद मेरे को आइडिया नहीं है Do कौन your आ रहा है। master's bidding. भाई 16,000 देख रहे हो शैने की उसके बाद Into the wind. डियोना ने अपनी शील्ड से 16,000 डैमेज करा है भाई, मजाक है क्या? सेव्स द गाय हु हैज C2 ना आएगा। देखो जो भी मेरे पास कॉन्स्टलेशन है वो सारी एक्सीडेंटल कॉन्स्टलेशन है। मैं कभी भी उनकी कॉन्स्टलेशन के लिए नहीं गया, दे ऑल आर एक्सीडेंटल कॉन्स्टलेशन। जैसे मेरे पास C1 काजुआ है, C1 काजुआ भी पूरा एक्सीडेंटल है, और आया का जो C2 है वो भी एक्सीडेंटल है। तो कॉन्स्टलेशंस में बस सारी एक्सीडेंटल है जो भी है। C1 20 है वो भी एक्सीडेंटल है। मैं कोई सी कैरेक्टर को C5 या C6 कर रहा था 20 के टाइम पे, या कोई नया कैरेक्टर आया था उसे ले रहा था, मेरे को 220 ड्रॉप हो गए। और आयाका का सीन ऐसे है कि आयाका का बैनर बहुत टाइम तक रहा था, तो मैंने क्या कर लेते हैं, विश मिल गई नहीं 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 मिली। काजुआ भी एक्सीडेंटल Take था। it easy. मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट कब होगा? प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ उन कैरेक्टर्स पे एक्सीडेंट हुआ कि जिनकी मुझे कॉन्सलेशन चाहिए भी नहीं थी। लाइक 20 मिल गई भाई C1। चलो काजुआ C1 तो फिर भी गुड है, और 20 C1 कितने घटिया है। 20 C1 में मैं करूँगा क्या? 20 विश में 3 मिल गए, क्या कर सकता हूँ? तुम्हें क्या मिले 20 विश में 3? मेरे को नहीं मिलेगा अभी 20 विश में 3, आज तक में नहीं मिले मुझे। 10 विश में 2 नहीं मिले, 20 विश में 3 की तो बहुत दूर की बात है। एंटर द अरनारा हाउस। तीन आकाश, तुम्हें 3 आका मिल गई भाई साहब। तुम C2 तो मेरे पास भी है, बट मेरे को ऐसे 20 फिश में तो नहीं मिली थी। वो बैनर उस टाइम बहुत लेट तक रहा था, तो मैंने विशेस करी थी तो मेरे को मिल गया था, वैसे मिल गया था, क्योंकि करने के लिए कुछ था नहीं तो मैंने कर लेते विशेस उस टाइम। Take it easy.
सारे डेली कमीशंस। अरे माँ। Add Astra. हाँ। Thank you for Add Astra. Add Astra, add Astra, add Astra. येलन के साथ खेल के क्या मज़ा आ रहा है, मौज ही मौज। हाँ भाई, येलन के साथ मज़ा तो आता है भाई। मुझे अगर किसी कैरेक्टर को करना है C2 में नहीदा करूँगा ब्रोकन इस वक्त। तुम्हारी येलन वेब देती है, देखना पड़ेगा यार, मेरे को आइडिया नहीं। आओ ट्राई कर लेते हैं। Unholy. Chivalry will never die. I'll bring my seasonings. अच्छा देखते हैं वेब देती है, कितना वेब देती है। मैंने वैसे अपनी जो ये लेने सब डीपीएस बिल्ड की हुई है। डीपीएस है नहीं, मुझे लगता नहीं मेरे ये लेंगे डीपीएस वाले स्ट्रैट हैं। Take it easy. Quietly now. As one with wind and cloud. You're toast! Witness the power of the one. Things are about to get dicey. Gotcha. 94 के दिया। एलिमेंटल स्किल पे अभी 94 के दिया। Quietly now. 94 के दिया है ना। येलन तूने 94 दिया ना अभी, बोल अपने मुँह से। Take it easy. ये स्ट्रैट यार, देखो अगर मैं थोड़ा क्रिट डैमेज बढ़ा दूँ तो ज़्यादा आता है। और अभी मेरा जो एलिमेंटल स्किल है वो भी 8 पे है। एलिमेंटल स्किल 8 पे है, तो अगर ये भी बड़ा होता तो आइम गेम्स 1 लाख तो क्रॉस कर देता आराम से। येलन और अगर शैने आ जाए तो मॉमी टीम कंप्लीटेड। Navigating the world is a ये whole lot रेडन easier with a few शैने different येलन, हाँ ये identities तो to देखो choose है। among. ये तो मैं भी एग्री करता हूँ, सारी मॉम्स एक टीम में, सारी मॉमीज एक टीम में, अच्छी तो बात है। गुड 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 गुड। ऊला भी है, अरे रे रे क्या नाम लिए जाते हैं मेरी स्ट्रीम। मुझे लग रहा है मैं इसलिए ही स्ट्राइक लगी थी मेरे चैनल पे। यहाँ पे लोग बहुत ऊला ऊला करते रहते हैं भाई, गंदी चीज़ों का नाम लेते रहते हैं। Gotcha. Nice and spicy. आता जी भाई, मैं गई मॉम इम्पैक्ट, जिसमें भाड़ में गई मॉम इम्पैक्ट। अरे आना इधर। Get them. Rain outlines your fate. Know my sword. Race you.
इस रील इन सुजीत रियल मॉमी मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? Take it easy. अरे वो कुछ भी हो भाई, Quietly now. वो मॉमी हो या डैडी हो या सिस्टर हो, इस टीम पे उसका नाम नहीं लिया जाएगा भाई। अच्छी अच्छी चीज़ों की बात हो रही है, तुम पता नहीं कहाँ चले गए। Take it easy. Fallen leaves. Adorn my night. Wind strike. I let my guard down. अरे Rain कर cutter. ना गार्ड डाउन, नल्ला तो भाई है। Game's up. Fun's over. Gotcha. Take it easy. इतना सब करके अगर शहने पर हार गया, रे नहीं हारोगे ब्रो, जीतोगे तुम, जीत तुम्हारी ही होगी, जीत तुम्हारी होगी। Take it easy. करो भाई हील। अगर नहीं इधर नहीं है तो सीनो निकालूं। देखो यार, नेक्स्ट अपडेट में दो डेंड्रो करेक्टर्स आ रहे हैं। दो डेंड्रो करेक्टर्स मतलब बेजू आ रहा है, एक तो तीन आ रहे हैं एक्चुअली में, बेजू आ रहा है, काव्य आ रहा है एंड नहीदा आ रही है। तो तीनों में से कोई तो निकाल ही लेना, बेजू भी इक्वली गुड है उसके लिए एंड बाकी नहीदा तो है ही अच्छी, तो निकाल सकते हो सीनो। और बाकी आप तुम्हारे ऊपर है यार, देखो तुम्हें पता ही है सीनो की वर्किंग क्या है, तो तुम और डेंड्रो करेक्टर तो देखो इवेंचुअली तुम निकालोगे ही ना। डेंड्रो तो बहुत मतलब डेंड्रो एलिमेंट तो अच्छा है ही, तो कभी ना कभी तो तुम डेंड्रो एलिमेंट निकालोगे ही, तो इन वो सोचते हुए तो सीनो निकाल सकते हो। जब सीनो आया था देखो, तब कोई डेंड्रो कैरेक्टर था नहीं गेम में, ट्रैवलर ही था बस एक, और मैं ट्रैवलर ही यूज़ करता था। ट्रैवलर था और कोहली थी, बट कोहली तो अच्छी, तो मैं ट्रैवलर यूज़ करता था। तो देख लो तुम्हें क्या करना है। मैं तो ट्रैवलर के साथ भी काफ़ी सही करता था। बाकी इट्स अप टू यू भाई, क्या करना है। ट्रैवलर नहीदा के बिना मत निकालो सीनो। तो नहीदा नेक्स्ट अपडेट में निकाल तो रहा है, पर चल बोल तो रहा था मैं नहीदा पर जाऊंगा। और देखो कोई ना कोई डेंड्रो कैरेक्टर निकालोगे ही फ्यूचर में, लाइक नहीदा तो गॉड है, तो नहीदा कभी ना कभी तो निकालोगे ही। और बेजू भी आ रहा है, बेजू भी निकाल सकते हो, और बेजू फिर दोबारा फ्यूचर में उसका रीरन होगा ही, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कभी ना कभी तो डेंड्रो कैरेक्टर अच्छा आएगा ही तुम्हारे। वैसे तो है नहीं ना कि तुम कोई डेंड्रो कैरेक्टर भी निकालोगे ही नहीं। Take it easy. कहाँ जाना है? Take it easy. Take it easy. टेलीपोर्टर, टेलीपोर्टर। Take it easy.
नहीं आई गेस हो तो गया सर का Take it easy. एओटी का फर्स्ट एक 1 आवर श्योर स्पेशल एपिसोड देखा मैंने एओटी नहीं देखा हुआ ब्रो अटैक ऑन टाइटंस ही देखा हुआ मैंने आई Take it easy. फोर्टी फाइव 4500 करना होता है क्या सैट तो है Take it easy. 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 Take it easy.
अरे क्या हुआ? हे हेलो बनी बी गेमर, हेलो ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम ब्रदर। लास्ट में बस देखा कि कार्निवल रॉ देखा था, 2 एपिसोड आए थे। क्या एपिसोड थे भाई वो दोनों। काला स्पैरस आ गए भाई, स्पैरस काला 3 एपिसोड थे भाई, दोनों बहुत अच्छे एपिसोड थे। मैं कितने बजे देखा था? मैंने 1:30 बजे देखना शुरू किया था, तो 1:30 देखा था, तो 2 एपिसोड देखते देखते मेरे को 3 या 4 बज गए थे, तो मैं फिर सो गया था यार। मैंने 1:30 देखना शुरू किया था। क्राउन्स कहाँ से लाओ ब्रो? क्राउन सिर्फ इवेंट से मिलते हैं, यू गो एंड चेक हेयर। इवेंट से मिलते हैं, देखो। एक क्राउन इस इवेंट में मिल रहा है, ये रहा क्राउन ऑफ इनसाइट। ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट से मिलते हैं और कहीं से नहीं मिलेंगे। ओनली ऑब्टेनेबल फ्रॉम इवेंट। ब्रो चेक माई सीन, इज इट गुड और व्हाट? इम्प्रूवमेंट नीडेड, ओके। कल स्पेक्टर की लेनी है, कल तुम्हारे वर्ल्ड में आता। ठीक है ठीक है, आज ही आ जाओ कल। मतलब कल और आज में क्या डिफरेंस क्रिएट होगा? अगर 61 130, मुझे वो बंदा चाहिए जो इंटरनेट पे ड्रैगन्स बेन सजेस्ट कर रहा है सीनों पे। मुझे वो बंदा जिंदा चाहिए। उस जिंदा चाहिए मेरे को, वो बंदा जिंदा। जिंदा तो मतलब जिंदा। लॉल मैं कल जस्टिस लीग देखा, स्नाइडर कट वाली बढ़िया। क्राउन तुम अगर सुमेरु और इनाजुमा में जो ट्री है उधर से भी मिलता है। हाँ क्राउन उधर Wherever से भी in this मिलता है, जो world I ट्री roam, होता है ना। I carry memories. सुमेरु और इनाजुमा में जो ट्री है उसमें मिलता है, बट मेनली वो मिलता है तुम्हें उससे, इवेंट से। इवेंट से ऑब्टेन होता है मेनली। ये कौन क्यों है भाई ड्रैगन्स वेन इस पे? जस्ट मेरे को कोई समझाएगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मेरे को समझ आए। बाकी तो इम्प्रूवमेंट तो बहुत चाहिए। बंदा कह रहा है कि मुझे बताओ कि इम्प्रूवमेंट क्या करूँ मैं। इम्प्रूवमेंट तो इम्प्रूवमेंट है इधर। Piece of यार my मुझे समझ home, नहीं आ रहा ये वाइड स्क्रीन displayed. क्यों नहीं रखा स्नाइडर It is कट the ने। last link I have क्योंकि to वो the land स्नाइडर of my कट है birth. ब्रो। चेंज द वेपन टू Titan crossbear if you have no other option. Minimum 6 crit rate and 1 T damage is needed on Xeno with 120 ER and 200 EM. Dragon's Gaiden is better than Dragon's Bane, and you can craft that craft kitten crossbear। इस इवेंट में वो गोल्डन पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे? कौन से गोल्डन पॉइंट्स? इवेंट शॉप, ये वाले गोल्डन पॉइंट्स, ये वाले गोल्डन पॉइंट इवेंट करके ही मिलेंगे। जो ये ब्रीज वाले इवेंट है ना, फोटो वाले इवेंट, ये करोगे तो देखो 120 मिलेंगे एक फोटो खींचने पे। ये 3 है 9 है ये टोटल, ठीक है 9 है ये टोटल। तो 9 फोटो खींचोगे, हर एक फोटो खींचने पे 120 मिलेंगे, तो इसके बाद तुम वो क्राउन खरीद पाओगे। This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. अच्छा मैंने तो सिर्फ वो बैलून्स कलेक्ट करने वाला इवेंट किया, मुझे लगा बाकी के फालतू है। नहीं भाई देखो, ये सबसे बड़ा इवेंट है। तो जो सबसे बड़ा इवेंट होता है ना अपडेट का, उसमें सबसे ज़्यादा जेम्स मिलते हैं। तो दिस इवेंट प्रॉब्ली हैविंग 2000 जेम्स। तो 2000 जेम्स बहुत होते हैं।
2000 जेम्स मुझे नहीं लगता इसको मिस करने चाहिए, तो ये पूरा इवेंट मिला के, ये तीनों चीज़ें मिला के, दिस हैविंग 2000 जेम्स, तो अगर तुम मिस कर रहे हो तो यू मिसिंग 2000 जेम्स। बाकी तुमने यूआईडी क्यों दी है, क्या देखना है यूआईडी में? मेरे में एडेड हो शायद तुम। यूआईडी क्यों दी है, क्या देखना है यूआईडी में? 837631 372, क्या देखना है इसमें? येलन एंड वॉन्डरर, ओके। देखो क्रिट डैमेज कम है, क्रिट डैमेज तो बहुत कम है, 117 है। यू नीड अ बेटर आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स अच्छे नहीं है क्लियरली, ये आर्टिफैक्ट्स अच्छे, और गॉबलेट में अटैक देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लेन अटैक पे स्केल नहीं करती, ये लेन एचपी पे और हाइड्रो डैमेज पे स्केल करती है। या तो यहाँ पे तुम हाइड्रो डैमेज दो, या तो यहाँ पे तुम एचपी गॉबलेट दो, अटैक परसेंटेज देने का यहाँ पे ज़ीरो बेनिफिट है, ज़ीरो, लाइक 0.1 बेनिफिट भी नहीं है, ज़ीरो बेनिफिट है। और लेवल अप करो, हाँ यार, अपनी येलन को तो पता चलेगा कि फाइनल क्रिट रेट तुम्हारा कितना है, क्योंकि अभी मुझे क्रिट रेट भी कम लग रहा है। साथ से साथ तुम्हें 10% मिल जाएगा क्रिट रेट, अगर मिला, मतलब इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलते। अभी 2 महीने हो गए हैं बिल्ड करते हुए। हाँ तो मतलब देखो, सही तो तुम जा रहे हो, 4 पीस सेट ही देना है, बट बस यहाँ पे गॉबलेट में हाइड्रो डैमेज दो या एचपी परसेंटेज, मेरा मानना होगा कि हाइड्रो डैमेज दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी वेपन तुमने ठीक दिया है, सेट पीस तुमने ठीक दिया है, जस्ट कि तुम्हारे आर्टिफैक्ट्स में अभी बहुत मेजर कमी है। 200 एनर्जी ठीक है, बाकी तो काफ़ी कमी है। और वॉन्डर हैविंग ठीक है, वॉन्डर 48 है। देखो 6 यहाँ पे भी, वॉन्डर पे भी मिनिमम 60% क्रेडिट इज नीडेड, तो वो ध्यान में रखना। क्रेडिट डैमेज भी थोड़ा बढ़ा लेना। यू हैव गिवन सेक्रिफिशियल टू वॉन्डर, नो यूज़। देखो सेक्रिफिशियल वॉन्डर पे कोई काम का नहीं है, या तो तुम विथ दे दो, या तो तुम कोई भी ऐसा वेपन दे दो जो प्योरली अटैक परसेंटेज देता है बहुत ज़्यादा। क्रिट रेट, क्रिट डैमेज वाला वेपन दे दो कोई अगर है तो, या तो ऐसा कोई वेपन दो कि जो बहुत ज़्यादा अटैक देता है, लाइक उसका सोल पर्पस है कैरेक्टर को अटैक देना। सेक्रिफिशियल का कोई यूज़ नहीं होगा इस पे। मेरी ये दिखाना, वेपन कौन सा दूँ, 3 स्टार बताना। वेपन तो तुमने सही दे रखा है, येलन को वेपन चलेगा, ये दौड़ेगा। 3 स्टार वेपन क्यों देना है? नहीं नहीं, ये वेपन सही तो दे रखा है तुमने, क्यों बदलना है? फिर वो देखो, जो वेपन्स देते हैं, सेक्रिफिशियल दे देते हैं, फेवोनियस दे देते हैं, एंड 5 स्टार में अगर आओगे तो एलिजी दे देते हैं, इसका खुद का एक को है वो दे देते हैं। तो वॉन्डर को वॉन्डर को तुम 3 स्टार वेपन क्यों देना है? देखो 3 स्टार वेपन्स में मत जाया करो, 3 स्टार वेपन्स मत दिया करो, स्पेशली अपने सब डीपीएस और डीपीएस करेक्टर्स को तो 3 स्टार वेपन्स बिल्कुल मत दिया करो। तो वॉन्डर जो है वो प्रॉपर डीपीएस करेक्टर है, तो मैं बोलूँगा कि विटसिथ दे दो वॉन्डर को, बहुत सही रहेगा। पर अगर तुम्हारे पास विटसिथ नहीं है तो कोई भी अटैक परसेंटेज वाला वेपन दे सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। मुझे नहीं पता, देखो ब्रो तुम कितने टाइम से खेल रहे हो, तो तुम्हारे पास ये वेपन्स है या नहीं। अगर तुम वेपन्स में जाओगे तो तुम विटसिथ दे सकते हो, विटसिथ क्रिट डैमेज देता है, और विटसिथ यहाँ पे नीचे अटैक परसेंटेज और एलिमेंटल डैमेज बोनस भी देता है, जो कि वॉन्डर उसका फ़ायदा उठा पाएगा। वरना एक वेपन आया था डोडो केयर, डोडो को टेल्स दोगे तो भी फायदा बेनिफिट होगा, क्योंकि तुम वॉन्डर से चार्ज अटैक करते हो, चार्ज अटैक का डैमेज इंक्रीज करता है, प्लस ये अटैक इंक्रीज भी करता है, और ये बहुत सारा अटैक देता है। तो ये दे सकते हो, आई ओ प्रिसिशन दे सकते हो, ये भी बहुत अच्छा वेपन है। फिर उसके बाद मेरे पास है नहीं और, हाँ तो ये ऑप्शंस हैं, ये दे सकते हो, आई ओ प्रिसिशन दे सकते हो, पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं। ऑर्थ वॉन भी दे सकते हो, ये भी बहुत अच्छा वेपन है। 4 स्टार्स में बता रहा हूँ, डोडो को टेल्स भी बहुत अच्छा है, जो मेरे पास है अभी मेरी आंखों के सामने। या तो विटसेट इज़ द बेस्ट इन 4 स्टार। बाकी तुम शॉप से खरीद सकते हो, बीपी से खरीद सकते हो, दीज आर ऑल्सो ऑप्शन। आईओ प्रिस्क्रिप्शन है तो वो दो ना, फिर देखो अटैक मिलता है इसमें बहुत ज़्यादा, और नॉर्मल चार्ज अटैक करोगे तो एक बोल्ट भी फायर होती है, जो कि 300% एज अ डैमेज अटैक एज अ डैमेज डील करती है। तो पैसिव एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट येस इट्स गुड। और लेवल अप करोगे तो ये काफ़ी अटैक दे देगा। 3 स्टार वेपन कोई भी वेपन दोगे तो उसमें तुम्हारा अटैक बहुत कम मिलेगा, एंड जो वॉन्डर है वो
अटैक पे बहुत डिपेंडेबल करेक्टर है। आई लीजा के लिए नहीं है, विचित नहीं है भाई के पास शायद से। आई लीजा के लिए मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि लीजा के लिए है तो तुम किसी और करेक्टर पे उसको यूज़ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वॉन्डर के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बट कंसिडरिंग कि तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वेपन में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लीसा को ये दे दो, क्योंकि लीसा को ये दे दो, कह रहा हूँ वॉन्डर को ये दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास बाकी ऑप्शन नहीं है। और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एक 3 स्टार वेपन, क्योंकि 3 स्टार वेपन्स और 4 स्टार वेपन में मेजरली अटैक का बहुत डिफरेंस आ जाता है। और जब डीपीएस करेक्टर से या सब डीपीएस करेक्टर से हम डैमेज करते हैं तो उसमें अटैक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अनटिल अनलेस करेक्टर अटैक पे रोल ही ना करता हो, जैसे येलन के अटैक पे स्केल ही नहीं करती, बट वॉन्डर करता है और वॉन्डर को अटैक चाहिए। तो इन दैट केस एक अटैक परसेंटेज वाला वेपन देना ज़्यादा बेटर होगा 4 स्टार में कम्पेयर टू अ 3 स्टार वेपन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि आईओ परसेप्शन दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास बेटर ऑप्शन यही है। We're back, my lady. Oh, you're back a lot sooner than I expected. You mustn't have run into any trouble then. Well, how did it go? बाकी तुमने सेट पीस What did you बिल्कुल come ठीक up दिया with? है। 4 पे Actually, शिमनावा we're still बढ़िया है उस investigating. पे। It's just that we've वॉन्डर discovered पे 4 something पे शिमनावा बढ़िया strange. है। I see. The clues you found have led you back here, in the city? Something like that. Yeah. You all look a little dispirited. Whatever you found must not have been very encouraging after all. Why don't you discuss it with me? Maybe I'll be able to say something to cheer you up? It's okay, my lady. It's not so much about me being upset with my father or anything like that. How should I put this? So something is wrong. Even the Traveler and Paimon have been uncharacteristically quiet. On any other day, Paimon would have already waved to me with a smile and shouted, "Dunyarzad, we're back!" So tell me, what happened? Well? My lady, please prepare yourself for what we're going to tell you next. It concerns the Master. The Master? You mean my father? Okay, The best, I you mean my understand. father? Don't worry about me. I'll listen as attentively as I can. My father has been supplying goods to Dakan al-Akmar? Yeah, it makes as little sense to us as it does to you. I've never doubted the Master's integrity, so I'm having a real hard time rationalizing how he could ever support an infamous brigade like them. Maybe he's not actually aware of the full story and just stumbled into the deal by accident. I can't help but agree with the Traveler. Huh? You mean you feel the same way, Dunyarzad? Thank you for sharing all this information with me. Since you've told me everything you know, I should also कल tell से you खत्म नहीं हुआ, about some नहीं नहीं। doubts that I've been harboring for quite a while. In the past, मैं I प्रॉपर्ली thought that सारे my डायलॉग father वगैरह hired a सुनता हूँ ना, तो bodyguard आई for गेस me उसमें थोड़ा so टाइम भी लगता है। मैं एक that I सेकंड wouldn't run away and get lost. However, there are plenty of capable mercenaries in the Corps of 30. Why did my father go out of his way to hire Dia? About that. Well, the Homayanis really needed bodyguards, so they reached out to the Blazing Beasts. Later, the Master told me that I was one of the best mercenaries he'd ever seen, and that I should stick around to become one of his bodyguards. He offered me a pile of Mora, so I just signed on. Well, but that didn't really answer my question. Just think about it. Why मतलब did क्या my ही बोर father हो रहा हूँ, वहाँ पे बोर हो रहे specifically हो? reach out to the Blazing ऐसे ही Beasts? होता है यार, Maybe ऐसे ही the होता Corps of है 30 शादी just वगैरह didn't में। have anyone available, or maybe someone recommended us. I've never given it too much thought. I think I get what you're saying. You think none of this was a coincidence. Precisely. At first glance, nothing seems strange or out of place. But there are many parts of the story that don't actually make any sense. If my father had always been in contact with Dakan al-Akmar, then it would make sense for him to bring Dia into our house. You mean
The goal all along was to get Dia to be your bodyguard? No, that's too much of a stretch. I cut all ties with my father a long time ago. He has no control over my life anymore. But that still doesn't rule out the possibility that your father has still been trying to influence your life without you knowing. So, the Master was not likely an innocent. Sorry we put all this on you so suddenly, Dunyarzad. It's okay, Paimon. I should actually be thanking you. Regardless of his reasons, if my father मैं has आता truly नहीं, been मेरे funding गले a में violent group of चाकू mercenaries, रख के then it's लाया my गया. duty to bring ऐसे ही him लाया back to जाता है reason. भाई. But is that गले पे really चाकू the रख के right लाया thing to जाता है do? भाई. हाथ बांध दिए My जाते हैं, father मुंह has पे टेप committed लगा दी many जाती है और गाड़ी atrocities में बिठा and दिया deserves जाता है. all the चलो. punishment that he has coming to him. I have zero sympathy for him. You may call me an ungrateful child, but my feelings will remain the same. However, the Homayani family has treated me with nothing but generosity and kindness. If we decide to investigate this further, we could end up implicating the entire Homayani family. I would be biting the hand that's fed me over all these years. Dia. It's all right, Dia. If anyone were to ask, you could always just say that I'm the one who instructed you to get to the bottom of this. You don't have to do that, my lady. I'm not conflicted because I'm afraid of taking responsibility. Besides, you're the one we should all be worried about right now. Hey, it's still too early to give up hope. What was बहुत the बोर thing होता about है फैमिली friendship फंक्शन again? में. हाँ भाई, बहुत बोर तो होते हैं भाई. Right, अगर yeah, कजन्स वगैरह ना अच्छे हो, You मतलब वो said it फन ना yourself, हो, Dia. बढ़िया ना हो, Besides, मतलब there's no point on getting all तो riled बहुत up बोर होते before हैं. अगर Thank you, कजन्स वगैरह everyone. फिर भी That ठीक makes हो a lot of sense. I तो कम बोर guess I होते should हैं. बोर always तो तब remember भी the होते हैं, बट trust that कम I've होते हैं. placed in people. In which case, my lady, could you ask the Master to come out and have a chat with us? Sure thing. I also hope he'll be able to give us a logical explanation. Let's meet at the usual place then. Usual place? Ah, right. Wait for Dunas are a usual place. Thank you for coming, sir. Please allow me to introduce these two. This is the Traveler, and next to him is his travel companion, Paimon. Ah, yes, my daughter has mentioned them from time to time. Want It's a playable privilege to Dunyazad? नहीं finally भाई, meet them in person. मुझे नहीं But चाहिए playable we may Dunyazad. skip all the pleasantries for now. What is the important matter you wish to discuss with me today? मुझे Well, बिल्कुल नहीं चाहिए we playable wanted to bring this Dunyazad. transaction record to your attention. There's something on this record that we're all pretty curious about. So, that's what you यार ये found. लोग स्टैंडर्ड बैनर में आफ्टर 3.6 डालेंगे. पता है, मैंने तो Seems यही पढ़ा like था I लाइव can't स्ट्रीम में. keep यही पढ़ा था everything कि ये from लोग you much longer. लाइव स्ट्रीम में उन्होंने If you मतलब wouldn't नीचे लिखा mind, हुआ था we'd बॉटम like an लेफ्ट में कि ये लोग explanation. 3.6 के बाद Well, डालेंगे दया को. It's a long and difficult क्यों story. मस्त तो लगती है And to भाई. be perfectly honest, I'm not sure if नहीं I'm यार, doing the right thing. What I do अपनी know, एलिमेंटल though, स्किल में वो dear, दया को फेंकेगी, is that अच्छा the लगेगा. truth will bring you no solace. If anything, it will likely cause इससे you a बढ़िया great दया ही खेल amount लो. of anguish. Wait, me? Yes, I understand perfectly why you came to see me, and I am touched by your collective commitment to do the right thing. But knowledge always comes at a price, and sometimes, as they say, ignorance is bliss. Your father Kusela और and क्या, I अपनी both एलिमेंटल believe स्किल that. में बर्स्ट में वो दया को फेंकेगी, कहेगी लड़, Of मेरी जो course, प्रोटेक्ट कर, you तू have the बॉडीगार्ड right है to मेरी. seek अच्छा and learn लगेगा. the truth, but I must warn you. मैं एक The facts सेकंड of this आया. matter may reduce everything you've built for yourself into sand, blowing in the wind. If you must proceed, then Kusela's heartfelt efforts will also fade into the wind like a fleeting mirage. His heartfelt efforts? I'm sorry, sir, but I'm not sure I follow. I've made it this far in life without a single drop of my father's support. I have my own ideals and ways of looking at the world, as well as people and causes that I've chosen to cherish and fight for. None of these things have anything to do with him. I came here today to support you as the head of the Homayani family. No warning will change my stance on that.
I understand. Then let me tell you a little story. Our family once needed to take a trip to the desert when Dunyarzad was just a baby. Along the way, we were attacked by bandits. They had superior numbers and quickly overpowered our bodyguards. When all seemed lost, a group of passerby Eremites lent us their support. Those Eremites were Kusela's brigade, Dekan al-Ahmar. Kusela's men told me that the attackers were Eremite mercenaries, just like themselves. I was shocked. Why would Dekan al-Ahmar go so far to save us and not spare the fellow Eremites? Kusela was grinning and walked over to play with baby Dunyarzad. She was startled by his unfamiliar face and nearly started crying. Really? I never knew. He said that he had no particular reason to help us. He just took pity on us because he had a daughter about the same age. We started talking about our children, and I sensed that he was a devoted father. To repay his kindness, I hired his brigade to help out at our estate for a time and offered everyone generous remuneration. So, that's what happened. It was many years before I saw him again. I almost didn't recognize him the next time he came knocking on my door. The man I knew to be strong and healthy had been reduced to a shell of himself. He couldn't even walk anymore without his cane. So, what happened to him? He was perfectly fine when I left the brigade. I'm not too sure myself. The only thing that didn't change was his cheery disposition. He said there was absolutely nothing to worry about and that he had gotten into a fight. That was all. He then suddenly asked me if Dunyarzad, now that she had grown, would need a bodyguard of her own. At the time, Dunyarzad was going through a particularly severe bout of her Elazar. There was no need for her to have a bodyguard when she could barely leave the house. But he kept coming back to the topic. Come on, it never hurts to be safe. How do you know a bodyguard won't come in handy one day? I was completely lost at first, until he recommended the Blazing Beasts, and in particular, a mercenary named Dia. So he was the one who recommended Dia to you. Indeed. He didn't say it out loud, but it was clear that he saw Deshret's relics as an evil group who would eventually corrupt every member in their ranks. He was already beyond redemption, but he hoped that he would be able to detach his daughter from the vicious world of mercenary life. If Dia could stay in my house and keep working as a bodyguard, then gradually her affinity for the desert would decrease, and she'd be able to leave her previous life behind. And that's why you offered her such generous compensation? Yes, but not just because of that. From the moment that he asked me for that favor, I also began to see Dia as my own daughter. And that's also why I tried to persuade you to stay when you asked for permission to leave. I was willing to spend however much it took. Kusela saved my daughter and I all those years ago in the desert. I could never refuse him entrusting his daughter to me. He was always like that, acting like he's oh so smart and self-righteous. Kusela said that he'd reimburse me for a portion of Dia's fees. I refused to take any Mora from him, but he'd always send me funds anyway. Eventually, I just accepted them as a token of his gratitude. And that went on for a while until I received another letter from him a few years ago. The letter contained a request to help him buy food, weapons, medicine, and even explosive materials. Wait! Isn't that around the time that Dekan al-Ahmar started becoming more aggressive? That's right. When I started to hear some nasty rumors, I became wary. I wanted to meet him face to face to discuss things. But by then, he was no longer receptive to my requests to talk. If I had to guess, it's probably because he doesn't want to put Dia at risk.
Oh, yes, I am That back. thought occurred to me as well. I figured that he probably came to me for help because he had nobody else to turn to. After some deliberation, I decided to send him some food and medicine. I turned down all his requests for explosives and weaponry. I am aware that even such a reduced gesture of support could lead to others coming to harm, but I could not simply किसी को तो reject his रोज plea for help. जोर से टट्टी In the लगी end, थी. it हाँ भाई probably लगी तो was the थी wrong यार, देखो decision. वो झूठी I बोलूंगा. plugged my ears बहुत to the जोर से rumors लगी and थी just भाई. chose a solution that जो made रिलैक्स me फील हो रहा है ना अभी, मैं feel बता नहीं सकता least कितना अच्छा guilty फील हो रहा है भाई about मेरे को. myself. If you can, please tell me where he is now. None of the things he's doing right now make any sense if he's just trying to keep me from getting tangled up in his world. समझ तो मैं भी. If all he wants to do is steer clear of me, भाई then ब्लू आईज है भाई maybe he लड़की shouldn't की. have brought me into this world भाई in the साहब first बहुत place. मैंने अब नोटिस किया भाई ये चीज. No, Dia, please don't भाई feel that जल्दी से way. क्विज खत्म हो यार, मेरा मन कर I'm रहा है just भाई दया angry पे विश because I करने का can't देख wrap देख my के head इसे. around any of his actions. ओह जल्दी के Another ऐसे way? मैं पकड़ के बैठा हूँ अपने हाथों को, दोनों I हाथों don't को ऐसे know. पकड़ के बैठा हूँ. I knew him, नहीं and करनी विश, he was नहीं करनी nothing विश, more नहीं than a करनी विश. childish brute. I can't understand what's going through his head. But I guess you do have a पूछोगे point. नहीं कैसे We पता haven't चला. uncovered the भाई whole truth yet. एक तो मैं एकदम We से still बोल के need to चला figure गया और out आई his गेस exact इतनी लेट actions आया and तो इसलिए पता reasoning चल for गया these होगा. last और few years. क्या बोलूँ I'll और do बता my दो best कैसे to पता help. चला. Of course, भाई anything दया between कितनी the two अच्छी of you लगती would है need to be यार. resolved between you and नहीं him करना पुल मेरे alone. को, नहीं करना I don't know पुल, Kusela's कंट्रोल exact करो. whereabouts. नहीं भाई Outside of मेरे को भी तो supplying his चाहिए. brigade with some goods, I tried my best to avoid getting involved any further with him. However, there's a man on the list named Jawed. He used to be a mercenary in the जावेद. desert and is now a member of the Corps of 30. He's responsible for supplying weapons and liaising with the Dakan al-Akhmar's merchant caravan. I think he should know Kusela's whereabouts. कर लो I've दया heard पर. that he likes to have a few drinks alone and enjoy the cool wind at night हारे outside तो the tavern. गारंटेड फेजू, बट Maybe जीत you'll गया be तो able to find him there. एल लग जाएगी ना फेजू Understood. के. Thank you, sir. मुझे एल लगाने नहीं है Then ना. I guess this is bye for now, unless... I'll stay and be with my father here. To be honest, I'm still a little dazed and haven't finished processing everything quite yet. My father has indeed done something wrong, but if I think about it, I'm also not sure if there was a right way to handle मैं यहाँ this कंट्रोल problem. करने का ट्राई कर रहा हूँ I कि नहीं feel पुल like करने, तुम कह रहे हो पुल करो Our यार. only course of action is to turn everything we know over to the Corps of 30 and let them render judgment. Yes, चैनल वापस I आई am थी खुशी में prepared दया. to accept whatever verdict they choose. नहीं It's यार, time to face my mistakes. ऐसे मत बोलो. मेरे को बेजू चाहिए. मैं साले 3 साल की गेम खेल रहा हूँ और अब बेजू आ रहा है नेक्स्ट अपडेट में. मुझे बेजू चाहिए भाई, मैं किसी कैरेक्टर को वेस्ट नहीं कर रहा. Go look for sir at night. मस्त है दया, पुल कर लो. मिल जाएगी दया, टेंशन मत लो तुम. सून दया घर आ जाएगी. पुल करो पुल करो पुल करो. अरे भाई नहीं भाई, ये बोल के गलत कर दिया भाई, तुम तो पीछे पड़ गए. हायर, let's go higher, higher, higher. जावेद, जावेद, जावेद. अब लोअर चल रहा है. चंदन आने के लिए मना किया था लम्बा. 4 टर्न पुल, तुम पता है ना 40 विशेस मेरे पास है, तो इसलिए कह रहा हूँ 4 टर्न पुल बस. कुछ तो ये बढ़िया बेक रहा. अरे तो मीट है. भाई कहाँ है भाई, कहाँ हो तुम. ये तो रहा भाई, ये तो बैठा आंखों के सामने. अंधा हूँ क्या भाई मैं. Huh? Who are you guys? दया मस्त I है know करो. what you've been up to. Smuggling weapons to violent brigades in the desert while working for the Corps. Pretty bold, if you ask me. Shh. Keep your voice down. How do you Keep your know all voice that? down. Keep Come your with me. voice down. We should Keep take your- this keep your elsewhere. voice I'll be happy to down. talk things over once we're somewhere private.
प्राइवेट में बात करनी है भाई, इसे देख रहे हो? This place should do. All right. Back to my question. How did you all know about me? Don't worry about that for now. You know what kind of punishment you'll face once we report you to the Corps, I assume. Wait. There's no need to jump the gun. Let's talk this out. What are your terms? So what's in it for you anyway, Mora? Well, I was a little tight on money at the time, and Kusela took good care of me in the past. I waited in my mind, and I couldn't find a reason to turn the opportunity down. I wouldn't only be helping my benefactor, but I could also make support नहीं Mora. bro, समझा Let me करो tell you bro. how it is. We're investigating Khan al-Akmar, and we're gonna put an end to their operations. If you provide some help for us, then we might just put in Yo a good Sam, word later to yo, reduce the hello, terms of your welcome to punishment. stream, brother. Hey, why don't we discuss this a little first? Listen, I made quite a bit of more from my last run. You just give me a number, and I'm sure we can... Shut it. बेजू फिर आ जाएगा, My देहा patience is नहीं running आएगी out. पुल देहा. You should देहा know तो when a आएगी. mercenary is after something other देहा than तो money. आके यार गेम में ही रह रही है. देहा तो स्टैंडर्ड बैनर में ही रह रही है. But you gotta देहा तो कहीं promise you'll जा put ही in नहीं some रही. nice words for me later. बेजू जाके पता नहीं They're कब always आएगा, on the पर move. देहा तो कहीं जा ही नहीं Here's रही. the spot they were at the last time I made my delivery to the desert. Feel free to go have a look. I'm just telling you though, it's not on me if they're not there anymore. Sure. And then you can forget about any nice words from us. Hey, come on. Now you're just being unreasonable. Really? And how do I know you're not Yeah, leading it's us straight permanent. into a trap? Don't नहीं forget, नहीं मुझे you're समझ आ the रही है भाई, one with सूरज no क्या करने का bargaining ट्राई कर रहा है chips. यहाँ पे. All right, I get it. Why don't you go take a Bros look, and before if they're hoes. not there anymore, I'll try to figure out something else for y'all. Now that's more like it. Let's move. And as for you, बेजू पे करेंगे try to नो stick देहा. around the city until we get back. नो You don't देहा, want us to call देहा. the folks from the अरे Corps and करेक्टर have them देन बहुत drag you अच्छा है back भाई, to पर the देगा. city. सही में. यार फोर स्टार्स भी अच्छे नहीं आए हुए. मैं नहीं कर रहा यार. फोर स्टार्स भी अच्छे नहीं आए हुए यार. कोई फायदा नहीं है मेरे को, कोई भी फायदा दिख नहीं रहा है विश करने का. अगर फोर स्टार्स भी अच्छे आए होते तो मैं फिर भी कर सकता था. फोर स्टार्स भी नहीं है ब्रो अच्छे. इससे बढ़िया मैं उर्दू के बैनर में देखूंगा ना क्या फोर स्टार्स आ रहे हैं. कर लो भाई, बाद में ना मिली तो क्या करोगे. कर लो. नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम तो मैप भी अनलॉक होगा. नहीं नहीं भाई, मेरा को कोई इतनी ज़रूरत नहीं है भाई दया की. Seems like we're in luck. That should be their camp right up ahead. Let's go. We'll finally get to the bottom of this ourselves. I'm here to see Kusela. Tell him to get out here. Tia, why are you here? Damage. Look alive! One with nature. एनर्जी जनरेशन रेट बहुत ही बेकार है भाई. मैं अब ट्राई कर रहा हूँ ऑलरेडी हो. इसके अटैक्स अच्छे हैं, नॉर्मल अटैक. भाई वेपन छोड़ के हाथों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं एकदम से. Haven't you all done enough? Oh, so are you also here to stop भी नहीं us? है यार. और क्या बताऊं. Stay out of this. It's got nothing to do with you. Get it on! Yes, we got the Oz, guys. We got the Oz. Gloves off!
प्रज्वल भी बोल रहा है कर लो पुल सोचे दया मम्मी होगी पुल कर लो मस्त है Enough मेरे को fighting. एक चीज बताओ We all यार know जब each दया other, की मैं and I don't एलिमेंटल want to स्किल take में things मार too रहा था far. तो येलन Just के bring Kusela to me. येलन का There's वो no use एक्टिवेट क्यों नहीं hiding हो him रहे थे मतलब anymore. येलन का वो जो बर्स्ट है वो क्यों नहीं लग रही थी Did you understand a single word I just said? Or do I need to bash your skull in some more? All right, everyone, let's all just calm down for a second. Dia, the boss can't come out and see you anymore. He died a long time ago. What? Seems like you've been out of the loop for a while. Guess that's for the best, though. वो दया At least मस्त है that's what सब है the old बट वो man पुल तो wanted. नहीं हो रही When did he die? What happened to him? A few years ago, Kusela broke up Dakan al-Ahmar. येलन की Went to the बर्स्ट Deshret's नॉर्मल relics अटैक headquarters by himself. पे मारती है ना तो ये नॉर्मल Was अटैक ही that तो when the करती है bus अपनी started बस पे acting up? तो देहा अपनी बर्स्ट में जाने के बाद नॉर्मल We अटैक ही तो would कर रही prefer to थी call it मैं taking नॉर्मल अटैक ही तो कर रहा था revenge. दया से या वो Every last एज अ person in कंसिडर्ड Deshret's मतलब वो कंसिडर्ड Let नहीं me होते start from the नॉर्मल beginning. अटैक से में Dia, बोल do दया you know ब्लू how the आइज head... Overwhelming strength and unquestionable authority? लिटरली ब्लू आइज Those नहीं were होते part of it, कंसिडर्ड वो ब्लू regardless of नॉर्मल अटैक में whether it be their सही है deepest sin. फिर That's तो प्रॉब्लम precisely. है But you, फिर तो मैं Dia, दया पुल नहीं कर रहा you were never asked. I never even knew this was a requirement. You were probably the Ever since you were born, Boss had been not only that, but in the end, he was just an ordinary He was forced to go to headquarters again. We all knew he was doing that for you. He wanted to get you out of this world. And that's why he became a दया shadow. मैं पुल नहीं कर रहा येलन के साथ because यूज you नहीं were कर too पाऊंगा young ना at the शिंकी time. के When you साथ left home after that. So even the blazing नहीदा के साथ यूज beasts करनी पड़ेगी और नहीं Yep. डेंड्रो करेक्टर मेरे पास सिर्फ एक ही all it. डेंड्रो करेक्टर है प्रॉब्लम हो जाएगी A few years ago, Boss said he needed to make another trip to headquarters. He was already pretty weak then, and we all assumed he was going to get beaten again. I suggested that he hand the role of leadership पुल over दया to me. पुल दया पर नहीं but भाई he मैंने said अभी there was बता no दिया भाई longer any need, मेरे पास एक ही डेंड्रो since the करेक्टर Khan बिल्ड है al-Ahmar दूसरा would कोई see है me no नहीं more. प्रॉब्लम हो words जाएगी अगर made मैंने no दया ले sense ली to तो me. क्योंकि मेरे को फिर उसको But डेंड्रो that करेक्टर के night, साथ यूज करना we पड़ेगा तो heard that a massive fire पहले tore एक और through डेंड्रो करेक्टर headquarters पुल करेंगे and देन razed सोचते हैं कुछ करने everyone's की records to ash. Everyone gained their freedom that night. Many members fled, not just from our ranks, but from the other brigades as well. ये भी तरीका But सही how है could we स्टोरी leave with बताने a का clear conscience? All of us who knew exactly what had happened. बाद The बाद में boss मिल can't have जाएगा just दया ले died लो for अभी nothing. Those heartless बाद jerks में at तो ऐसे दया headquarters भी मिल took him जाएगी from us. From that point on, ऐसी मैं इतनी the 50-50 sole हारता purpose हूँ of तो the Khan दया al-Ahmar मिल ही became जाएगी revenge. The big fire that boss started was quite a blow to headquarters strength. It's given us the opportunity to launch our attack. Even though we're outnumbered, we vowed to see our revenge through to the very end. There were people from headquarters who changed their names and went into hiding. दया मिलने का Some चांसेस fled to कम other है बाद में brigades, अच्छा and others ठीक से हो जी escaped to तुम the दया निकालो rainforest. रील भी निकालेगा But we won't let any of them escape our wrath. They'll चांसेस all pay for what तो they've मेरे भी done. कम है जिंदा We've रहने के suffered plenty of losses पर मैं as हूँ ना well. जिंदा करता हूँ ना To स्ट्रीम keep going, we need an enormous amount of supplies, from food and medicine to weaponry and explosives. All we can do is exchange our loot from Mora, and then देखो use जितना that मुझे to get पता supplies. सोजी तभी स्ट्रीम We तो नहीं कर forged सकता Boss's handwriting and उसके पास sent out बेचारे का many नेट letters नहीं to है his तुम former उसे स्ट्रीम friends. करने के लिए बोल रहे हो Thankfully, many people were willing to come to our aid. We were also able to attract many mercenaries who shared our goal. We've endured unspeakable pain to win many impossible battles. Deshret's relics have become weaker and weaker, and now we finally have an opportunity to directly strike their headquarters. Paimon doesn't know what to say यहाँ anymore. प्रज्वल बोल रहा है दया निकालो तो प्रज्वल तो ये भी बोल रहा है कि तुम विश करो तब मैं We करूँगा do know right तो from मतलब तुम wrong. जब करोगे तब but we रील were करेगा तुम sinners वो from वाली the बात very तो प्रज्वल beginning. के सुन नहीं रहे We do not deserve the freedom that the boss won for us with his life. Boss always loved his old-fashioned hero stories. Those tales about sacrificing yourself to save the world. We used to always laugh at him for it. But in the end, he really went and lived those stories out himself. As for me, I never भाई considered आर myself a बैनी hero. C6 मेरा बैनी We're C6 all है the भाई lowest of the low. बस मैंने कर नहीं We रखा have no right to even imagine such an नहीं तुम existence. पहले But नहीं भाई maybe those hero stories he liked foreshadowed everything that was to come. The spirit of the hero touched all those he had saved, and more people joined his cause. Maybe we were all just acting along with the play in the beginning, तुम करो मैं भी but करता as we acted the parts and recited the lines, we सब were करो drawn मैं तो in. कह रहा हूँ And now,
We want to see the story through to the end. I'm sorry, Dia. I know you always found us insufferable ever since sorry, you were Dia. young. Just Dia, think of this Dia, as a oh madman Dia, ranting. Dia. I'll go with you. Huh? Dia? You wanna go with them? Dia, you I wanna grew go up with with these him? guys, and I know they're not bad people. It's just that some पहले रील situations मैं get रील तो so कर ही नहीं bad रहा. that it's difficult to tell good from evil. All I know is that Deshret's relics must be destroyed. Furthermore, I want to go see the place for myself. I want to know if my father is still there. I know you don't want to get involved in this, so there's no need for you to tag along. I can do this on my own. Yeah. Paimon feels like we'd only regret it if we don't see this through to the end. Thank you. We'll be a lot stronger together with you. I bet Boss would lose his mind if he ever knew you'd join us at the very last moment like this. Considering all the losses and injuries we sustained, we can't afford to turn down someone as powerful as you. He can think whatever he wants. But the fact is, I owe him this much. ये भी कुछ खत्म नहीं हुई है. ऐसा लंबी कुछ है. This blinding sunlight is such a pain. No way I can get a nap in this weather. तो सब छोड़ रील C6 करो मैं भी करेगा. नहीं 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 भाई मेरे को वीडियोस वगैरह बनानी होती है. मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा भाई. बैनेट को C6 कर लिया तो मेरे पास C6 कॉन्स्टलेशन पड़ी है बट मैंने कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी भाई. मेरे को वीडियोस वगैरह बनानी होती है. मैं वाले पंगे नहीं ले सकता. Is this the entrance? We sure didn't run into much trouble on the way here. फाइट वाइट कराओ यार बढ़िया सी. Paimon didn't स्टोरी expect it को to इसमें look ना like this आजकल on the करेक्टर स्टोरी को inside. इसमें फाइट वाइट नहीं They करवाते should all यार. be रात holed up बातें in बातें here. ज़्यादा होती है. Don't know how फाइट many वगैरह people we've करवाते got ही नहीं left, होती. though. Who cares? We'll round up all of them. Still, we should be careful. Even if they've only got one Yeah. We'll know what the Deshret's relics may have been a force to be reckoned with before. Yeah. They... P3 constellation, Novelist 4 Ps, 1991. क्या करेक्टर ये लोग बिल्ड करके देते हैं समझ के बाहर है. मैं Into the wind! No, my sword! भाई इसका एनर्जी रीजनरेशन रेट बहुत बेकार है यार. Game's up. Fun is over.
सीरियस की इसका एनर्जी रीजनरेशन रेट बहुत बेकार है भाई देगा रात का हार्ट किया Rain outlines your fate. Huh? You asked for it. Run with nature. oh no Quietly now. Out of the frying pan, into the... Buckle up. I'll be back. This way, follow me. We're almost there. एक तो उसकी अल्ट भी इतना लास्ट लॉन्ग नहीं करती ऊपर से उसका एनर्जी रीजनरेशन रेट भी बहुत बेकार है पार्टिकल्स भी जनरेट नहीं कर रही वो इतने मेरे को तो समझ ही नहीं आ Hey, रहा you guys okay? It seems like Watch out, the enemy's coming from ahead. Well, don't worry about us. Let's go. We can't let the boss step. Let's check if there's another way. The sooner we can make it... Let's see. I think I see a way through over there, but it's being blocked by something. Okay, let's... Boba, get them! Let's get it on. rain outlines your fate. Body in mind. Another mechanism like the one before, but this one's being blocked off in the middle. We just need to adjust it a little. Body in mind. You're toast! Let's get it on! Ha! You're dead meat! Into the wind. ना मेरे को बढ़िया नहीं लग रही भाई दे आई एम नॉट इम्प्रेस्ड Take it easy. Gotcha. Time to act. Out of the frying pan, it's... Buckle up! One with wind and cloud. One with nature. You asked for it!
I wasn't expecting anyone to make it through from the other side. But as a desert dweller, I suppose we should be used to our folks defying all expectations. Don't waste your breath. You have nowhere to run. Run? Had I wanted to run, I would have fled 1,000 times already. I witnessed the golden age of Deshret's relics. Even if I could leave this place behind, all that awaits me now are endless days of humiliation and ruin. Even now, my brothers and I still believe in one thing. The greatest should never live to remember their fall. So you want to go out in a blaze of glory? Let us draw our weapons! We will show them the true power King Deshret bestowed upon his followers. They are but two, while we hold within ourselves the entirety of the relic's glory. Wave 1, charge! Eliminate them! Oh, pass off, man. Sure. Flags high. The birds call. Don't think that you won. We're just getting started. Quietly now. Here comes the catch. King Deshret will not abandon any one of his followers. Now you're testing my patience. I'm getting sick. As one with wind and... Brothers! This is where we prove our faith. Do you all just want to die? None of us plan to leave this place alive! The golden slumber. The फाइट commander's तो हुई finally है भाई fallen. इसको इसमें But they're नाइस still coming at us! ए स्टोरी को इसमें फाइट तो हो रही है भाई नाइस This नाइस place is नाइस like a gladiator's ring. They just keep coming no matter how many we beat. Yes, keep fighting! There's no need to fear, and no need to back down! This is our last stand! When the next wave comes, I'm going to see if I can... Get out of my way! Come and face me, Michel! Apologies, Lord Michal. They've... So... Time to pay for everything. I will be buried in the sand, Hey, wait! कुछ तो होगा अभी मुझे लग रहा है We were too late. It's over. There's no... But if you're still going to cling on to your so-called Hey, Dia! I found the mechanism. I'll get you all back up here right away. Let's go. गैस देख रही है मुझे तो और कुछ नहीं देख रहा प्रीशियस चेस्ट है वहाँ पे हेलो यार हेलो ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम Who are you filthy rats? And why are you... You... Who knows? Hey, have you ever heard of a man by the name... Why would I know? This is your last... Hey, if you're here to find someone... The irony. His life became a light for so many. Where's the records room? And... It's right over there. I mean the old records room. The old records room? Kusela. Watch your mouth. He was definitely... But in the short time it's... He couldn't have possibly outrun us if he wasn't a fraud. And after that... मैं उड़ा दूँ ना प्लीज ठीक है अभी उड़ाता हूँ अभी खोल दो तुम्हारा Just over there.
There's nothing left in them. बस एक क्विज कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम्हारा Let's अकाउंट go. खोलता हूँ. We'll leave you. Spare them no mercy if they try anything. और फोन में गेम नहीं था मैं खेल और ओके ब्रो मैं बस ये क्विज कर लूँ फिर उड़ाता हूँ. अरे ये वर्जन डे और क्या कर रहे क्या वो कर रहे क्या मैंने याओ के साथ खेला पता नहीं क्यों सही लग रही यार सही लग रही वाली बात नहीं है इसकी ना एनर्जी रीजनरेशन रेट बहुत कम लगा मेरे को और ये जब अल्ट में चली जाती है ना जस्ट यू कांट कंट्रोल देम लाइक उसको फिर तुम अल्ट में जाने के बाद वो 4 सेकंड जो है ना उसमें तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकते जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये शुरू हो जाती है अल्ट में तो वो 4 सेकंड बाद ही रुकेगी और वो 4 सेकंड की ड्यूरेशन मुझे बहुत कम लग रही है. दूसरी चीज इसका एनर्जी रीजनरेशन रेट कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से. मुझे ये बर्स्ट जीपीएस लग रही. बर्स्ट जीपीएस तो ये है ही वो तो है ही ये लगने वाली क्या बात है वो तो है ये बर्स्ट जीपीएस बट मेरे को जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है एक तो बर्स्ट इसकी जल्दी खत्म हो रही है और दूसरी चीज बर्स्ट में तुम्हारे पे कंट्रोल नहीं है. लाइक मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अब मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है बर्स्ट में. तीसरी चीज बर्स्ट का रीजनरेशन रेट मेरे को बहुत कम लग रहा है. बर्स्ट आने में बहुत टाइम लगा रही है. लाइक इसकी एलिमेंटल स्किल तो कोई पार्टिकल ही जनरेट नहीं कर रही तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स लग रही है इसके साथ. तो मैं तो विश नहीं कर रहा जस्ट फॉर द लुक्स मैं विश नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसका गेम स्टाइल भी अच्छा नहीं लगा अब. तो जस्ट फॉर द कैरेक्टर डिजाइन मैं नहीं कर रहा विश. Thought so. Wait! Isn't that the toy sword you played with as a child? The dragon is no more, for Princess Dia has slain it. Its head now hangs above the city gates. ओ छोटी दया younger दया भाई साहब मैं मिस कर देता अभी ये मैं गया हुआ था. This is the most important line. You can do it. But Dia, you defeated the dragon. Everyone's waiting for your speech. Still too shy, huh? All right, I'll do it. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more, Dad. चलो लेगेसी कंटिन्यूस. फादर की लेगेसी पे कंटिन्यू करेगी. चलो. What's this? Don't you remember? You asked Paimon, and Paimon said that these opportunities don't come by. Hey, come on, Paimon. Anyway, the point is that you should eat Junior Zad will. My chest was fit, but when everything came to an end, it was as if I'd lost the thing that was most important to me. Yeah, you're right. To many mercenaries, Mora is the most important thing. Idrisi and the other... My reality shattered when I found out that the father who always told me hero stories was in fact a bad guy. Despite all we're hypocrites. Yeah, you're right. It's just You're back! Are all of you alright? There she is. Yeah. 5 मिनट दो यार स्टोरी का खत्म हो जाए. Paimon will explain.
काफी लंबी है यार स्टोरी बस. तूने तो begins to cry. I'm sorry. और रोने It's दो all भाई right, से my पानी में lady. फेंक दो. You were hurt by all of this as well. Dia. Hey, don't worry about me. My father probably... That thought has even crossed my mind. However, there was always something deep within my mind that refused... But now that I can... I understand. That doesn't mean I won't be... It's just like Idrisi said. I also want to catch up to my father and become... Even if the ending of the story may be child... कमेंट करके जाना पेंसिल ने. हाँ हाँ ये कुछ तो खत्म हो यार. ऑन जो कल से कर रहा हूँ ये कुछ. I can't thank you enough for taking... अभी भी खत्म नहीं हुई यार. क्या ड्रामा है. क्या नीमो डैमेज बोनस चाहिए. कौन डोमेन कौन सा करना है. Take it easy. Take it easy. एम्बलम का एम्बलम में तुम्हें नीमो डैमेज बोनस कुछ अच्छा उसमें चाहिए. शिमी नावा. Here you are. Finally, I found you. Hey! Aren't you that mercenary who bit his tongue? Wait. Once I woke up, but when I got there... Ah, so you... Yeah, I had joined the cause to repay an old favor from Kusela. Now that everyone's already turned themselves in, one of the injured members gave this box to me. Everything left in the... Thank you. No worries. We are all just living our own truths. There's no need to comment or judge. So this एक एनिमल box डैमेज बोनस contains everything that Dia's father left behind. चाहिए. कोई भी पीस चलेगा. ओके ओके. It feels lighter than expected. Well, back in the day, the first thing he did with any Mora was spend it on things like drinks and meat. But let's see what's inside. What's this? It's just a bunch of junk. Ugh, kinda stinks. Perhaps it's just been left unopened for too long. A handwritten copy of a storybook. The paper's already yellowed, and it looks like it's about to fall apart. It was against the Academia's rules to possess books for personal use. If he was going to break that rule, he could have at least copied something useful. That probably means this was really important to him. Ah, and here are a few bags of children's snacks. The packaging's completely deteriorated. Maybe that's where the smell was coming from. Did he get those for you? Yeah, but here's the thing, though. Even when I was a child, I was never a fan of these kinds of snacks. He'd always say that he got them for me, but in the end, he always ate more than I ever did. Who even leaves snacks in a box like this anyway? Isn't that just common sense? Forget it. Let me see what else is in here. A razor, some buttons, some round iron tiles, a wooden toy puppet, a wool scarf, which from the looks of it probably belonged to a woman, and a hair clip? Why are these things here? I'm suddenly feeling a little scared. I'm sorry, my lady, but this is just the kind of man he was. He probably saw this box as some kind of personal trash heap and dumped any and everything in there. 1, no, 2 empty liquor bottles. Tell me, you guys, are these the kinds of things that a normal person would leave behind? Huh? There's something in the bottle! Oh, you're... All right, I got it out. It seems to be a piece of paper with some writing on it. The bottom part's all damaged from moisture, though. Let's hope the writing didn't smudge. I was suddenly to Dia. It's all right. My conditions. If you're reading this letter, you were adorable, but once... Anyway, back to the reason being... Wait, what? Surely... Really felt like the... But as fate would have it, I went out into the desert for a drink one day, and you were just lying there, small and helpless. But your cries were so loud they made my head hurt. Now that I think of it, you really were a bundle of energy. Sounds like he's serious. I told Idrisi and the others that I had slipped up with a woman while out and about. I'm sorry that I was their most... Anyway, you possess the kind of freedom and kindness that we could only dream of. As far as how you should live your life,
That'll be up to you to decide. That's... in the end, he was, I suppose, or... He was a good father. Yeah, Do you already? I do. I just have one that there once existed and that only If you end up finding... Sure, I appreciate it. I'll help too. Thank you. My life is certain because no matter where I've gone, I've always been surrounded by incredible kindness. Finally, it's done. It's done, bhai saab. Give me my gems. Bhai saab, finally it's done. आगे चीज़ें बंद करेंगे एंड गाड़ी खोलते हैं. मेरा गेम चालू हो गया. कौन सा गेम? एपेक्स. यार एपेक्स शायद मैं अभी ना खेलूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है. अभी मैं एन की आईडी लॉगिन कर रहा हूँ. ठीक है, पता नहीं, शायद एपेक्स अभी मैं ना खेलूँ क्योंकि एन की आईडी पे रेजन उड़ाने का मिशन करने हैं. फिर 3 तो बज जाएंगे, जाना होगा. रात को खेल सकते हैं. अगर तुम रात को आते हो तो रात को खेल सकते हैं. हमारा लेवल 20 हो गया. अगर लेवल 20 हो गया तो हम रैंक खेल सकते हैं. किसी दिन से नहीं खेला यार मैं एपेक्स वगैरह. तुमने मेरे को आईडी पासवर्ड कहाँ भेजा था? ये रहा. मिल गया मिल गया. ये जब कोई न्यू अकाउंट खुलता है तो ब्रो ऐसे ही होता है. जब न्यू अकाउंट खुलता है तुम्हारे अकाउंट पे डिफरेंट चीज़ होंगी ना जो मेरे अकाउंट पे नहीं होगी, तो इन्होंने फिर डाउनलोड की होगी और या वो वेरीफाई कर रहे हैं. मैं 5 मिनट में आता, इतना ये हो जाएगा. मैं 5 से 10 मिनट में आता. ठीक है.
हाँ ब्रो, हाँ मैं आ गया। क्या बता। हाँ खा के आ गया, बढ़िया। गर्लफ्रेंड कॉल किया क्या? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। फेसिलिटी नहीं नहीं नहीं, इसे गाड़ी हटाने गया था। गाड़ी हटाने गया था, कुछ काम हो रहा है नीचे। गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। गर्लफ्रेंड नहीं है भाई मेरी, आई एम सिंगल। ये बोलने में प्राउड फील होता है? देखो, प्राउड व्राउड तो मेरे को कोई फील नहीं होता। बुरा लगता है मेरे को तो, बल्कि उल्टा। होना चाहिए, एक साथी होना चाहिए भाई। साथी होना चाहिए। कहाँ से जाए, यहाँ से जाए, कहाँ से जाए, कहाँ से जाए, कहाँ से। 10 और कीबोर्ड माउस भी साफ करने हैं, बहुत गंदे हो रहे हैं। कब बोर हो रहा है, सोच रहा घर भाग जाऊं। देखो, रिस्क लेना है अपनी, अपने उस पे लेना भाई रिस्क। ये बहुत रिस्की काम है, घर भागना। मी ऑलवेज सिंगल, क्योंकि इससे फैन फॉलोइंग बढ़ती है। नहीं यार, एक साथ ही होना चाहिए भाई। यार बोर हो रहा, क्या करूं? एपेक्स खेल लो, या तुम देख सकते हो कुछ। अभी तो देखो, मेरे को स्ट्रीम कर रहा हूँ, उसके बाद जाना होगा, एक काम है। फिर वहाँ से आऊँगा तो देन आई विल गो टू जिम से आऊँगा तो नहाऊंगा धोऊंगा, एंड देन मैं वापस खेलने बैठ जाऊँगा। मोस्ट प्रॉब्ली एपेक्स खेलूँगा। सबको बोर हो रहा है। सब बोर हो रहे हैं भाई। कोई घर में बोर है, कोई घर के बाहर बोर है, पर बोर तो सब है। सॉगर टीम ले लो, एंड डोमेन्स चले जाना कॉम्स के बाद एनिमल डैमेज शेयर जॉर्ड वाला। ओके ओके, ठीक है ब्रो। कमीशंस के बाद मैं काटता हूँ। डोमेन्स करते हैं हम डोमेन्स करता है। ये देखो, अभी मैं स्पेस दबा के छोड़ूंगा तो देखना है आएगा। टर्टल नहीं लगती मेरे स्ट्राइक ना देता, मैंने आएगा को टर्टल बोल दिया।
नहीं नहीं सही में लगती है भाई टर्टल, मजाक नहीं कर रहा है। देखो तुम्हें दिखाता हूँ, एक और डेमो दिखाता हूँ। ये देखो टर्टल लगती है भाई ये। हमें काफ़ी मीम्स भी देखे हैं इसके इससे रिलेटेड, टर्टल से रिलेटेड। इसी नहीं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। इस पे ये वाले विंग्स मत लगाओ ना। फाइव विंग्स बैक तुम्हारे 5 विंग्स लॉन्ग है। सैड। वाले विंग्स लगाओ, वाले विंग्स मैच करते हैं। ये वाले भी लगा सकते हो, वाले भी मैच करते हैं। ये वाले मैच नहीं करते किराए वाले। कुछ नहीं किया था मैं उसे, लग गया। ओके ओके Adventure time! Everybody stand back! Sakura swirl! Take flight! मैंने सीफा हो गया जानता। हाँ तुमने बताया था मैंने सीफा हो गया। Let's light it up! Whirling snow! कोई कमीशन Ad Astra at... Thank you for Ad Astra...
आगे टीम सेट है पार्टी सेटअप में ओके देखता हूँ कहाँ है मेरे को तो नहीं दिख रही ब्रो शाओ की टीम कौन सी है शाओ की टीम कहीं शाह है ही नहीं देखो मैं बना देता हूँ एक टीम फटाफट यूज करते हैं वही टीम I can't wait any अरे longer. शायद हटा दिया रुक जाऊंगा बना रहा हूँ फिर कि मैं बदनाम हो या नाम लाऊं तेरा Need the help of an elder, huh? अरे फक शाओ ही नहीं लिया शाओ ही नहीं लिया शाओ तो लेता सच Evil shall be dispersed. Out of the frying pan. Too late for regrets. You're toast. Teamwork is strength. Have fun with this gift. Evil conquering. Here. Useless. We'll see about that. Let's light it up. Nice and spicy. Too late for regrets. If I didn't act. Give me any more damage, please, game. Truth repeats its course. Everybody stand back. Disappear. Worthless. Worthless. Here. Worthless. Here. Useless. Booba, get them. That really hurt. एक गॉबलेट है दोनों एचपी है गॉबलेट है सच देख लेना कोई आर्टिफैक्ट अगर तुम्हें अच्छा लगे और तुम्हें वो लॉक करना हो तो देख लेना ठीक है मुझे जो लगेगा मैं वो कर दूंगा बाकी अगर हो सकता है तुम्हें भी कोई अच्छा लगे तो वो बाद में लॉक कर लेना Nice and spicy. Have fun with this gift. I'm going in. Lament. Here. Worthless. Here. ऐड तो है लास्ट बचा है Boring.
नहीं देख रहे बेकार के। हाँ नहीं है ब्रो, नहीं मिला कोई अच्छा आर्टिफैक्ट भी नहीं मिला। सैच ठीक है ब्रदर, सब कुछ कर दिया जो मैं अभी कर सकता था। ब्लर नाम कर लिया तुमने अपना। आह एक ना एक दिन मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, अभी तो नहीं मिला और कुछ। चलो यार, के लिए स्ट्रीम इतना ही थी। जो भी लोग देख रहे थे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोस चलती रहेंगी, स्ट्रीम होती रहेंगी, तो देखते रहेंगे और क्या ही बोलूँ। सो बाय बाय गाइस, एंजॉय लाइफ एंड विल मीट इन द नेक्स्ट स्ट्रीम, जो कि कल होगी इसी टाइम पे अराउंड 12 o'clock। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।